allied operation, जिसमें कि जो कि holes drills from the solid with one drill and further machine to be for their enlarge and finish the hole, produce seeds from bolt head, nut head, screw or rivet for a washer. These allied operations are as mentioned. First operation, that is your core drilling. What is the core drilling? In their core drilling of holes is done with a core drill to and imparts enlarge and improve the geometric shape of the previously drill hole. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ड्रिल होल हो चुका है उस पे फिर से वर्कआउट करेंगे और उसको ज्योमेट्रिकल शेप जो कि प्रीवियसली ड्रिल होल था उसको और इम्प्रूव करेंगे, उसको और इनलार्ज करने की यहाँ पे स्टेप्स किए जाएंगे. There core drilling of holes is done with a core drill to enlarge and improve the geometric shape of the previously drilled hole. And second, that is one is the step drilling. That is name indicated, that is your step drilling. In the step drilling, it is the operation of cutting a hole of 2 or more diameter by one drill. स्टेप ड्रिलिंग में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो होल हो रहा है वो 2 और मोर डायमीटर का बाय सिंगल ड्रिल, यानी वन ड्रिल. एक ही ड्रिल में जो है वो एक से अधिक जो है वो हम लोग डायमीटर वाले होल जो है वो क्रिएट कर ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम स्टेप ड्रिल या कॉम्बिनेशन ड्रिल कहा जा रहा है. कोर ड्रिल में था कि हमने उसमें जो प्रीवियसली होल था उसको इनलार्ज किया और इम्प्रूव किया बाय ज्योमेट्रिकल शेप. स्टेप ड्रिलिंग में क्या हो रहा है, इस ऑपरेशन में हम जो कटिंग होल है ऑफ 2 और मोर डायमीटर बाय वन ड्रिल वो हमारा कहला रहा है स्टेप ड्रिल. इसमें जो है कटिंग का होल कर रहे हैं वो 2 और मोर डायमीटर बाय ओनली या वन ड्रिल, जिसको हम लोग स्टेप ड्रिल या कॉम्बिनेशन ड्रिल कहा जाता है. बोरिंग इज द ऑपरेशन बाय इनलार्जिंग और फिनिशिंग द कंप्लीट होल. बोरिंग क्या है, इन द बोरिंग ऑपरेशन तो जो कि काफ़ी ऑपरेशन यूटिलाइजेशन होता है बोरिंग ऑपरेशन. तो बोरिंग इज द ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग और फिनिशिंग द कंप्लीट होल विद अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. And there are boring is the operation to enlarge and finishing the complete hole with a single point cutting tool. This operation is normally done by the boring machine. तो यहाँ पे हम लोग बोरिंग ऑपरेशन करने के लिए बोरिंग मशीन का यूटिलाइजेशन करते हैं, but can also be accomplished on the lathe group of machine tool. Boring correct the position of the hole and make it concentric with axis of rotation of the spindle. तो बोरिंग ऑपरेशन क्या है, बोरिंग इज द ऑपरेशन ऑफ इनलार्जिंग और फिनिशिंग करना कंप्लीट होल विद अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. इस ऑपरेशन में हम लोग नॉर्मली डन करते हैं ऑन द बोरिंग मशीन. जो ऑपरेशन बोरिंग ऑपरेशन होगा वो बेसिकली हम लोग बोरिंग मशीन के थ्रू करते हैं, और बट कैन आल्सो बी अकम्प्लिश्ड ऑन अ ले ग्रुप ऑफ मशीन टूल्स. This one is the diagram for various operation. There were drilling, reaming, contour boring, spot fishing, and countersink. And then another operation name is the reaming. Reaming is usually follows drilling or core drilling, and its purpose to remove all courses traces of previous machining operation with the help of a multi-point cutting tool. It's called reamer. तो यहाँ पे हम लोग multi-point cutting tool use करते हैं, that is in reaming operation. Reamer hole is of a accurate size और good surface finish. रीमर होल का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर एक्यूरेट साइज और गुड सरफेस फिनिश के लिए. रीमिंग कैन नॉट बी करेक्ट द position of the hole since reamer merely follows as the previously drilled hole. In this diagram you have seen that this is the reaming operation, and reaming usually follow
drilling are core drilling, and its purpose is to remove all the core traces of previous machining operation with the help of मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. हमें यहाँ ध्यान रखना है कि रीमिंग ऑपरेशन हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, जिसको हम लोग रीमर बोल रहे हैं, एंड रीमर होल is of accurate size and good surface finish, and reaming cannot be correct the position of the hole since reamer merely follows as the previously drilled hole. Then another operation that is shown in this diagram, that is a contour boring. In the contour boring, that is name suggests, contour boring, then contour sinking, then a spot facing. And then a contour boring basically consists of in enlarging a portion of an existing hole to a larger diameter and making the at the bottom surface at the bottom of the larger diameter flat and square. This is done to accommodate a screw head, bolt head, or nut below the upper surface of the hole. And the operation is accomplished by a special tool is called contour bore. काउंटर बोरिंग के लिए यहाँ पर हमने एक स्पेशल टूल्स का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर बोर with a regular boring tool. Then another is that is counter sinking. This is the diagram for counter boring, and this is the diagram for counter sinking. The counter sinking is done after the drilling a hole to chamfer the entrance to a hole or to make a conical recess. यहाँ पे diagram देख सकते हैं. This is the conical recess at 82 degree. There are a conical recess or seat for a flat-headed screw or rivet so that the heads are flush or below the main surface. Standard countersinks are 60, 82 or 90 degree included angle. As shown in this diagram, there are a 82 degree. This is the standard countersinks are 60 degree, 82 degree and 90 degree included angle, and the tool a countersink is a short to similar to a reamer. Then there are a spot facing in this diagram. There are a spot facing. And there are spot facing, it is a machining of a boss or pad at the face of a hole. It is normally done to produce a square bearing surface for a washer and nut or the head of a bolt. Both spot facers and counter bores are pilot guided. This one is the spot fishing diagram. This one is the spot fishing. This one is the drilling. This one is the reaming, counter boring, spot fishing, and counter sinking. These are the operations are, that is allied operation. And there are allied operation. There are core drilling, step drilling, boring, and reaming, counter boring, counter sinking, and spot fishing. These are the drilling and have their allied operations.